Yes, Assalamu alaikum. Walaikum assalam, sir. Yes. Walaikum assalam. Yes, we are going to start in this session. You may ask me questions, and I expect a lot of questions from your side. First of all, let me complete it. African child in uniform saluting the flag of France, a first denotation, child saluting the flag. Second level of significance, child hails France as a great empire. And again, child, uniform, flag, and salutation to produce desire, meaning, and to establish myth. Now, basically, he's saying that there is no a great empire, the France as such, and but we pin importance to this, and then as you know that path and signification. First, black French soldier saluting. This is the first significance. Second, patriotism, pride, militarism, and the third, whether black and white, young or old, people are proud to salute the French flag. Now, this is, you see that the third connotation in this sense. Now, how we debate on myth. Myth are not eternal, but go through mutating and reforming. Now, it means we manipulate the myth, and we are basically responsible for their production. It uses symbols, metaphors, and metonyms to convey a certain identifiable meaning. We use symbol, we use metaphor, and we use again certain symbols and signs in order to have our meaning. It portrays reality in certain manner and compliance with a certain ruling ideology. Basically, myths are useful to create an ideology. We create an ideology that may be political ideology, that may be social ideology, but we try to portray through myth. The myth analysis as a political activity whose objective is to locate the historical ideology at the base of cultural representation. Again, you see that there is a lot of connection between myth and culture. And again, when it is related with culture, it has a connection with the society, and it has a connection with the social values. At the same time, there may be and there is political myth. Creation and understanding of myth is a function of human experience in particular time, places, and circumstances. So in different times, in different places, in different circumstances, we are trying to create myth. So every myth has got its own time, its own place, and it has own culture, we can say. So tourism, cooking, advertising, etc. manifest mythical language. It means the distorting of facts and figures are there, and then there is no truth as such. So there is always, when we talk about metonyms, there is always substitute of one thing for another thing, and metaphors are used for comparison. We compare soap and surf with the supernatural things, and then there are certain symbols and images, objects we try to connect with the just you see with the meaning. To manipulate public perception and experience, basically myths are used to manipulate public perception and experience. So taking the things its own way. So a person, we can say a person or thing having an imaginary and unverified existence. So myth basically is not truth.
is not based on reality. So it is imaginary, and it is distorted fact, and it is manipulative. So an idea is created, a story is created, and people are to believe in that, but that is not true. So when we talk about sorcerer, basically sorcerer is saying that sign is connected with the language. The language is a system of science that express idea. So through science, you see that we express idea in the language, and then there is a great relationship between signifier and signified. So and but Barth basically, he is going for the second order signs. So he connotative meaning of certain things. So this is my lecture. Please, you may ask me any question. You are most welcome. Yes, this is first slide. You may see any slide, and then you ask me question, and just you tell me also what you have understood, and I need your comments in this regards also. Yes. Yes, I will deliver lecture on certain terms, just like structuralism, post-structuralism, and then because I feel it is very important, but to some extent I want to try, I want uh, to make it clear over here, this lecture from mythologies. Yes, anyone, please, do you have any question? You may ask me. Yes, you want to make comments also at whatever you have understood. If you haven't understood anything, just you tell me, please. Hello, sir. Is my voice coming? Yes, yes, please. I can hear you clearly. Yes. Yes, please. Is my voice clear, sir? Yes, yes. Go ahead. Yes, beta. Go ahead. Yes, ask what you are trying to say. Is my voice coming, sir? Yes, yes, please. Your voice is coming. G. Sir, I want to ask that कि सर कोई भी चीज जैसे वो एक साइन है वो सिंबल है एनीथिंग अगर कोई ऑब्जेक्ट भी है जिसे हम देख रहे हैं उसका एक लिटरल मीनिंग होगा और दूसरा जो हम एसोसिएट मीनिंग उसका करेंगे तो क्या वो सिर्फ कोई साइन हो सकता है या फिर वो कोई बात भी हो सकती है जैसे वर्ड्स होते हैं सेंटेंसेस होते हैं लोगों को भी हम अपने एसोसिएट करते हैं तो क्या वो सिर्फ लोग ऑब्जेक्ट्स तक महदूद है या लोगों को भी हम जो है उनकी भी हम मिथ्स लाइक जो भी चीज किसी भी चीज को हम एसोसिएट कर रहे हैं किसी का हम खुद से मीनिंग निकाल रहे हैं वो मिथ में आएगा तो वो ऑब्जेक्ट्स में होगा या फिर वो लोगों तक भी आएगा G. Yes, beta. When we talk about myth, or when I mean to say, when I'm talking about myth, basically there are certain objects, there are certain signs, there are certain objects. जैसे आप जो है वो आप देख लें, जैसे एप्पल जो है, एप्पल बेसिकली इट इज अ रेड, and apple gives you energy. Now, apple basically symbolizes temptation also. Temptation को जो है apple symbolize करता है. क्यों temptation को symbolize करता है? Because there was a temptation. You see that apple tree is a temptation जो है वो उसको हम लोग एक symbolize करते हैं, temptation के sense में भी जो है उसको लिया जाता है. Now, and this temptation has got connotative meaning of that apple. Otherwise, apple, when the image and object of apple comes in mind, it is red, and as you know that the color comes in your mind, and you know that apple contains iron, and apple has got its own uh, uh, benefit. So but we
just take it to connotative meaning. We attach it. Now suppose why it is temptation. Why it is temptation? Because you see, Adam and Eve were tempted in heaven. That symbolizes, basically that symbolizes an apple tree. That symbolizes an apple tree. Now it means that there is a connotation meaning of that, and we connect it to the religion. So we basically we connect certain objects, certain images towards the things. We basically manipulate it. We try to just understand it. So therefore we science basically are the I have said science are the building blocks of the language. Science are very important. जैसे आप एक एग्जाम्पल ले लें कि जवेरिया, बेटा जवेरिया, सर बट माय क्वेश्चन इज दैट कि क्या हम लोगों के बारे में भी मिथ्स रख सकते हैं? yes please. Do you hear me? Yes, sir. One minute, one minute, yes. Can you see the slide? बेटा आप स्लाइड देख रहे हैं? No, sir. No, No, नहीं आ रहा. अभी आ रहे हैं? No sir, still not. अच्छा, सर सिर्फ आपकी पिक्चर आ रही. एक मिनट. बेसिकली ये रुक गया था, नेट जो है वो ड्रॉप हो गया. जस्ट आई रिकनेक्टेड. अभी आवाज आ रही है? Yes, sir. Now we can see. Yes sir, सर आवाज भी आ रही है और बेटा स्लाइड भी आ रही है. बेटा आप जी जवेरिया आप पूछना चाह रहे हैं क्या हम लोगों को भी जो है कनेक्ट करते हैं मिथ के साथ जो है? एग्जैक्टली हम लोगों को भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वी टेक वन पर्सन फॉर अ गुड साइन एज अनदर पर्सन एज अ बैड साइन. हम लोग कहते हैं इस शख्स से सुबह सुबह अगर मुलाकात हो जाएगी तो हमारा कोई काम नहीं होगा. बेसिकली ये जो है एक सुपरस्टिशन है और फिर मैनिपुलेटिव व्यू है. एक ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग किसी बंदे से अगर मिलें तो हमारा काम नहीं होगा या हमारा काम हो जाएगा, या वन पर्सन इज अ गुड साइन एंड बैड साइन फॉर अस. तो ये बेसिकली मैनिपुलेटिव व्यू है. तो मिथ भी बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन फॉल्स एंड सुपरस्टिशियस आइडिया. जो है वो सुपरस्टिशियस आइडिया पे मिथ जो है बेस कर रही है. उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, उसकी कोई वेरीफाइड जो है वो चीज नहीं है उसके अंदर जो है. बट वी हैव बेसिकली हमने जो बनाई, हमने खुद से बनाई है. इसीलिए जो है मिथ पर्सन के बारे में भी हो सकता है, चीजों के बारे में भी हो सकता है. यस, I think I believe you have understood me. जी बेटा. Yes. Yes. Yes sir, but Javeria Bashir is not here right now. Yes. Yes. Any other question? Yes. You want to ask me, or whatever you have understood? Yeah. You want to discuss with me? Yes, please. Go ahead. Sir. जी.
Sir, what connection between sign and myth? What is connection between Sign and myth. sign and myth? Yes. Now you can see this. Yes. You can see this. There are the two basically two levels of signification over here. You can see that the first blue one, it is connected with language that Saussure has given it. Now, according to Saussure, language is a system of sign that express an idea. Now, you take it as sign now and take it signifier and then signified. Now, what sign is that? Now, suppose साइन कोई चीज हो सकती है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, को आप इसे समझे कि साइन जो है इट इज बेस्ड ऑन यू सी द रियलिटी. आप यू टेक द ट्रैफिक साइन जो है वो आप तीर का निशान देते हैं और आप राउंड अबाउट बेसिकली ये साइन होता है. बट दिस साइन हैज गॉट यू सी दैट मीनिंग. वो उस साइन की कोई मीनिंग होती है एंड यू अंडरस्टैंड इट, you understand that meaning. But if you take that you see that signified towards any thought or creation of any mental image, तो आप उसको सिग्निफाइड करते हैं कोई मेंटल इमेज की तरफ जो है वो अगर जाते हैं आप जो है, तो वो फिर आप उसको जो है वो उसको कनेक्ट करते हैं. नाउ यू सी द लैंग्वेज बेसिकली according to Saussure, language has got a signifier, signified, and sign. Basically, he is talking about denotative meaning of, you see that signified, or you see that there is a sign. But according to Barthes, myth has got signifier, signified, and sign as well. But Barth attached Hello? importance to, yes, do you hear me? Sir, is my voice coming? Yes, Barth sir. basically he connects importance The to, discount to money. yes, Javeria Bashir, yes, your voice is coming. Please don't talk to the people that are there in at your home. Please just you listen to me what I am saying. Yes. Do you hear me? Yes, sir. Please continue. Yes. And for Barth, a myth, basically the sign, signifier, and signified create myth. Now, you can say that there is a sign, there is a signifier. You can say that there is an object and that object communicates something. But what it communicates, now we signify it. Just I have told you about the tree, about its significance, and then we just create the thought and we have mental image of our tree, and just we create it, we just trying to say that we connected something, we connected to the shade of friendship, or this is shade of tree is there. Now it means that signify, we signify it and we give it a name or meaning. So Barth basically he is trying to say that uh, myth, basically there's a sign, there's a signifier, and there's signified. It creates a myth. As we know that from where myth generates, myth is generated through language. Now myth is originated from language, and this science basically are building blocks of the language. So sign can be you see that signified. Now it has got the meaning in a greater context. It has got manipulative meaning, and it has got meaning that cannot be true. ऐसी meaning हो सकती है कि जो बिल्कुल सच नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो है लोग उसको बिलीफ मानना शुरू कर दें,
उसके बावजूद लोग उस पर बिलीव करना शुरू कर दें। मिथ बेसिकली हैज नो स्टैंडिंग, बट पीपल जस्ट बिलीव इन दैट। लोग जो है वो उस पर यकीन रखते हैं और उसको बिलीव करते हैं। तो सोशल जो है वो इन तीनों चीजों को लैंग्वेज की तरफ जो है वो लेके जाता है, और जो है बात जो है उनको जो है वो मिथ की तरफ लेके जाता है। लेकिन मिथ जो है वो मैनिपुलेट कैसे होता है? थ्रू सिग्निफाइड, क्योंकि सिग्निफाइड बेसिकली थॉट होता है, क्रिएशन ऑफ ए मेंटल इमेज हो जाता है, and this is called, so Barth basically pins importance to the second order sign or connotative meaning of that, जो है वो उस पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस करता है, क्योंकि बार्थ की जो थ्योरी है वो बेसिकली मिथोलॉजी की वो बेस्ड करती है सोशल की थ्योरी स्ट्रक्चरलिज्म पे, और सोशल जो है वो लैंग्वेज पे एम्फेसाइज कर रहा है। लेकिन जो है वो बात जो है वो मिथ की तरफ, वो कहता है कि जो आपका सिग्निफायर है या जो सिग्निफाइड करता है, जो सिग्निफाई करता है, वो बेसिकली जो है वो मैनिपुलेटिव या डिस्टॉर्शन ऑफ फैक्ट भी हो सकता है, उसको लोग जो है बिलीव के तौर पे लेते हैं। यस सर जी। सर 101 बार रिकनेक्ट होने के बाद मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम ऑब्जेक्ट्स के अलावा लोगों के भी बारे में मिथ्स रख सकते हैं, उनको भी सिग्निफाई कर सकते हैं? बेटा जब आपको ये शक हुआ कि आपकी आवाज नहीं आ रही, तो आप घर के लोगों के साथ जो है वो कम्युनिकेशन शुरू किया आपने, तो वो आवाज भी आ रही थी जो बलोची में आप सर बात कर मैं रही थी। मैंने आपकी सर मैं क्वेश्चन, उसको कह रही थी वो घुमाओ घर में। बेटा बात सुने, मैंने आपको आपको आंसर दिया। मैंने कहा बिल्कुल जो है हम लोगों के बारे में भी बहुत सारे मिथ रखते हैं। मैंने आपको कहा कि हम लोग कहते हैं कि ये बंदा जो है सुबह सुबह अगर हमें मिलेगा तो हमारा कोई काम नहीं होगा, ठीक है? तो ये बेसिकली बंदा जो है बैड ओमन है, खराब बंदा है, इवल है बेसिकली वो। ये बेसिकली उसको बोलते हैं सुपरस्टिशन। अब सुपरस्टिशन क्या होता है? इट इज अ अनरियल थिंग, इट इज जस्ट द क्रिएशन ऑफ आवर मेंटल कैपेसिटी, लेकिन ऐसा नहीं होता। यस हम लोग जो है लोगों के बारे में भी जो है वो मिथ को हम लोग जो है जनरेट कर सकते हैं या हम मेक कर सकते हैं, जैसे हम लोग जो है चीजों के बारे में करते हैं। तो मिथ बेसिकली चीजों को हम लोग जो है वो उसको जो है वो जनरेट करने की या क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो लोगों के बारे में भी हो सकता है, जो है चीजों के बारे में होता है, तो लोगों के बारे में भी जो है मिथ होता है और हम लोग जो है जनरेट करते हैं। जी तो जैसे कोई हम फ्लावर अगर देखते हैं, रोज देखते हैं, तो हम हमें कुछ कुछ लोग उसे एज ए जर्नल फ्लावर के एक पिक्चर दे के नॉर्मली दे के इग्नोर करते हैं, और कुछ लोग उसे एज अ लव सिंबल समझ के कनोटेट करते हैं। तो इस तरह सर ये तो मीडिया में भी आता है ना कि हम कुछ देखते हैं तो कुछ लोग उसका अलग से मतलब निकालते हैं और कुछ लोग अलग मतलब निकालते हैं। बेटा बात सुने, देखें व्हेन समवन इज गिविंग रोज टू समवन, तो हम लोग ये क्यों बोलते हैं कि ये उसको चैलेंज कर रहा है? तो रोज जो है बेसिकली सिंबल है लव का। अगर रेड रोज होगा तो रेड फीलिंग्स को सिंबलाइज करता है, ठीक है? रेड फीलिंग को सिंबलाइज करता है। हम लोग उसको कैसे ले रहे हैं, ठीक है? हम लोग उसको ले कैसे रहे हैं? हम लोग जो है देखें, ये भी रेड रोज जो है वो बेसिकली सिंबलाइज करता है, लव को सिंबलाइज करता है। रेड जो कलर है वो इमोशंस को सिंबलाइज करता है, हॉट इमोशंस को सिंबलाइज करता है। और इसको हमने जो है एक एक एक्चुअली जो है वो हमारे यहाँ एक थॉट है जो कि रन कर रही है, ठीक है? थॉट है जो रन कर रही है। लेकिन जो है हम लोग अगर बोलें कि ये जो रेड रोज है बेसिकली ये ब्लड को रिप्रेजेंट करता है, तो वो अच्छा नहीं है, या इस किस्म की कोई चीज हम लोग उसके साथ जो है वो कनेक्ट कर लें, तो हम लोग अगर मैनिपुलेट भी कर सकते हैं किसी चीज को, जो है वो किसी सेंस में हम लोग जो है किसी पॉजिटिव चीज को मैनिपुलेट करके नेगेटिव सेंस में भी हम लोग
ले सकते हैं। जैसे आई हैव गिवन द एग्जांपल, एप्पल का मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है। एप्पल जो है वो बेसिकली उसका कलर रेड है, एप्पल अच्छा है, हर कोई इसको लाइक करता है, लेकिन एप्पल इज एप्पल ट्री and it comes in the just you see that evil sense also, temptation sense also. तो एक बंदा जो है किसी को रोज दे रहा है, तो it doesn't mean that the person is very much sincere in his feelings. अब जो उसकी फीलिंग्स है ना, उसकी जो फीलिंग्स है, हो सकता है वो डिस्टॉर्टेड हो, मैनिपुलेटिव हो सकता है कि वो टेम्पटेशन हो उसके अंदर जो है। तो ये भी इस सेंस में भी जो है वो हो सकता है, इस सेंस के अंदर जो है एक बंदा जो है ही डजंट मीन इट, हो सकता है कि वो फ्लर्ट कर रहा हो बंदा जो है वो किसी को रेड रोज जो है वो देके, ठीक है। लेकिन मिथ बेसिकली डिस्टॉर्शन है, मैनिपुलेटिव कोई चीज है, बट लेकिन हम लोग उस पे जो है बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। अब आपने देखा होगा कि जो है गाड़ी के पीछे, रक्षा के पीछे जो है लोग जो है एक फटी पुरानी चप्पल जो है वो उसके पीछे लगा देते हैं क्योंकि वो किसी की नजर ना लगे। बेसिकली people think that while doing all these things जो है वो तो नजर से बचने के लिए और बदजन से बचने के लिए जो है वो ये होता है, लेकिन it is a belief of people and it is manipulative idea। ऐसी इस तरह कोई चीज नहीं होती जो है वो कि वो जो है आपस में को काली चीज जो है वो उनको नजर बद से बचाए। it is basically thinking of the people, जो थिंकिंग है, जो थॉट है, लोगों ने उसको जो है कैनोटेट किया है, उसको जो है इस तरह लिया है, इविल को इस सेंस में लिया है, सुपरस्टिशन को इस सेंस में लिया है। तो मिथ भी बेसिकली यही चीज है जिस पे लोग बिलीव करते हैं। जो चीज सही ना हो लोग उस पे बिलीव करते हैं, हम लोग उसको मिथ बोलते हैं। जी यस प्लीज बेटा, आपको बात समझ में आ गई जवेरिया? यस सर, आ गई। यस सर जी। एनी अदर क्वेश्चन इफ यू जिस अच्छा, मैं एग्जाम में भी चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि जो मेरा लेक्चर है या आप जैसे चीजों को पढ़ेंगे आप उसको ऐसे जो है, मैं चाहूंगा कि मैं आपसे सवाल करूं तो आपने जो समझा है, किस तरह इसको समझा है, आपने वो लिखना है जो आपने समझा है। तो जो अपने लैंग्वेज में और अपने आइडियाज के थ्रू जो है बताने की कोशिश करेगी या करेगा, उसको मैं बहुत अच्छे नंबर दूंगा। और जो है एज इट इज लिखा हुआ है उसको उसको एज इट इज लिख के आएंगे तो उनको नंबर इतने अच्छे नहीं मिलेंगे। बेसिकली आई वांट टू से दैट कि आपको लेक्चर समझ में आ गया या नहीं आया, या आपने उसको पढ़ के समझा है या नहीं समझा है। बेसिकली मैं ये चीज देखना चाहूंगा। यस, any other question please? Any comment you would like to ask? Yes जी बेटा। सर सर आप एग्जाम से पहले लेक्चर अपलोड कर दीजिएगा ना यूट्यूब पर। मैं कर दूंगा। तो हो सकता है कल भी एक लेक्चर जो है मैं कोशिश करूंगा कि इस हफ्ते जो है कंप्लीट करके, और मैंने जो पिछले वाले जो है ना वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। आप देख लेंगे, मेरे ख्याल में 3 या 4 लेक्चर मेरे अपलोड हैं। तो ये मैं जैसे ही ये आप कंप्लीट होगा तो मैं ये अपलोड कर दूंगा। जी रेस्लिंग वाली एग्जांपल दोबारा बताएं कौन सी? सर, ये रेस्लिंग वाली, जी रेस्लिंग की। बेसिकली मिथोलॉजीज के अंदर जो है वो मिथ को डिफाइन कर रहा है, और मिथ को डिफाइन करने के बाद जो है ज्यादातर जो उसका पार्ट है वो एग्जाम्पल्स बता रहा है। आपने आपने देखा होगा कि रेसलिंग जो है बेसिकली जो आप देख रहे हैं उसको, इट इज एन एग्जेजरेटेड व्यू। ये बेसिकली एग्जेजरेटेड व्यू है। सॉरी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसे दिखाया जाता है। कैसे दिखाया जाता है? उसमें बहुत सारी चीजें जो है एग्जेजरेशन में दिखाई जाती हैं। अच्छा, ही इज ट्राइंग टू से दैट he is trying to Barth basically takes it to another way.
he is saying that wrestling, it is not about winning or losing, but it is about suffering, defeat, justice, evil. ज्यादातर उसमें आपने देखा होगा कि डिसीट को दिखाया गया है, चीटिंग को दिखाया गया है, और ट्रेटर को दिखाया गया है, और ऐसा एज सच नहीं है जैसे दिखाया जाता है. बेसिकली रेसलिंग को जो है हम व्हेन वी टेक इट इन द फॉर्म ऑफ सफरिंग, व्हेन वी टेक इन द फॉर्म ऑफ defeat, when we take it in the form of cheating, when we take it from in the form of other things, basically हम लोग जो है उसको जो है ये एक मिथ जो है वो के थ्रू जो है चीजों को बताने की कोशिश की गई है. तो कहने का मतलब ये है कि the things, the concepts that are very much connected with the wrestling, these concepts are not based on reality, or these concepts are not based on you can say that truth. So wrestling is distorted view, manipulative view जो है उसमें शो होता है. तो रेसलिंग जो दिखाई जाती है हमें वो झूठ है, कुछ भी नहीं है. लेकिन जो झूठ है, रेसलिंग में तो मिथ खुद क्रिएट की जाती है ना, क्रिएट की जाती है, लेकिन लोगों को पता है कि ये झूठ है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग उस पर बिलीव करते हैं. लोग बिलीव करते हैं ना, बहुत सारे लोग जो है रेसलिंग देखते हैं, ठीक है. yes, लेकिन लोगों को पता है ये सच नहीं है, लेकिन उसके बावजूद लोग उसको बिलीव करते हैं. ये मिथ बेसिकली है वही चीज जो है जो कि इट इज नॉट ट्रुथ, बट स्टिल द पीपल बिलीव इन इट. तो बेसिकली जो डिस्टॉर्टेड चीज हो, तो अब जो है, अब आप देखिए इसमें जो है साइंस भी बहुत ज्यादा होते हैं जो है वो, उसमें आपने देखा होगा कि वो जो है साइन और सिग्नल्स के थ्रू जो है बेसिकली रेसलिंग खुद जो वो बना हुआ है, उसका जो कोट बना हुआ है, इट इज आल्सो ए जो है ना साइन कुछ जो है वो शो कर रहा होता है. तो बेसिक मकसद जो है, व्हाट शुड बी द बेसिक पर्पस ऑफ रेसलिंग, देयर शुड बी विन और लूज द गेम. आप जो है विन और लूज पे, अच्छा विन और लूज पे अगर होगा तो 15 मिनट में या 20 मिनट में ये खत्म हो जाएगा, और ये शो शराबा जो भी है जो बात करते हैं तो वो चीज नहीं होगी. लेकिन ज्यादातर जो है शो शराबा ये बातें सारी कुछ जो है, जब हम लोग उसको बेसिकली जब कनेक्ट करते हैं इवल के साथ, डिफीट के साथ, सफरिंग के साथ, और लोग उसको जस्टिस के तौर पे जो है वो लेते हैं, किसी के साथ ज्यादती होती है, कोई ट्रेटर होता है या इस किस्म की कोई चीज होती है, लेकिन ये तो सच है ही नहीं. इट इज नॉट ट्रुथ, ये ट्रुथ नहीं है. तो रेसलिंग जो है बेसिकली इट इज आल्सो अ मिथ, जो उसकी बेसिस है जो है वो मिथ है और कुछ भी नहीं है, और इट इज नॉट ट्रू. ठीक है, तो एक जो है झूठ है और कुछ भी नहीं है. तो जैसे जो है सॉशर कहता है कि जो लैंग्वेज है, जी जो लैंग्वेज है वो सिस्टम ऑफ साइन के थ्रू जो है किसी आइडिया को एक्सप्रेस करता है. लेकिन बार्ट कहता है कि मिथ बेसिकली वो साइन के थ्रू जो है किसी आइडिया को जनरेट करता है, किसी आइडिया को रिप्रेजेंट करता है. जी सर आपने ट्रुथ रियलिटी की बात की, सर तो रियलिटी में भी हम वो रियलिटी और ट्रुथ बिलीव करते हैं जो हम चाहते हैं कि वो हो, जैसा हम देखना चाहते हैं, जैसा हम सुनना चाहते हैं, हम उस चीज पे बिलीव करते हैं. इज इट लाइक दैट? जी नहीं, आप रिपीट करें, जस्ट कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन. मीन सर हम उस ट्रुथ पे बिलीव करते हैं जो हम खुद सुनना भी चाहते हैं और देखना वेरी भी गुड, चाहते हैं. वेरी इंस्टेड ऑफ गुड. दैट हम यस यस, वेरी गुड. आपने उसको अभी अंडरस्टैंड कर लिया है. यस बेटा, आप देखें कि इवन जो है जस्ट इन योर कल्चर, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इन योर कल्चर, द कल्चर ऑफ बलूचिस्तान या इन योर कम्युनिटी, देयर आर सर्टेन डिस्टॉर्टेड एंड मैनिपुलेटिव थिंग. आपने आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीजें डिस्टॉर्टेड हैं, बहुत सारी चीजें मैनिपुलेटिव हैं, स्टिल पीपल बिलीव इन दैट. ये ऐसा है या नहीं है? यस सर. यस. अच्छा,
people believe in those things, but they are very happy in telling those things. बहुत खुश होते हैं, ऐसा ही है ना? जी सर। Yes. तो it means जो myth है, ये कह रहा है कि myth basically जो है it's a belief है and it communicates. So it's based on the system of sign, signifier and it signified something. तो वो बेसिकली जो हम सिग्निफाई करते हैं उसको हम लोग जो, एक तो ये सिग्निफाई तो होता है, ठीक है ना, एक सिग्निफाई होता है, बेसिकली हम लोग उसको जो है जब उसको मैनिपुलेट करते हैं और अपनी मीनिंग देते हैं, और वी वांट दैट अदर पीपल शुड बिलीव इन इट आल्सो, और वो फेमिलियर हो जाए तो वो आप ऐसे समझें कि बेहतर है और लोग उस पर बिलीव करना शुरू करते हैं। लेकिन वी नो दैट इट इज नॉट बेस्ड ऑन ट्रुथ, हमें पता है कि ये जो है इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ऐसा ही है ना, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। यस, देखें हम लोग जो है when we talk about Greek mythology, Roman mythology, so it means that there is no connection, there is no reality, there is no cause and effect. ये पता नहीं हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, लेकिन उसके बावजूद जो है हम लोग जो है वो चीजों को इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं या नरेट करने की कोशिश करते हैं। जी, yes, any other question? I would like to take your question. और जैसे जवेरिया ने बहुत आखिरी में बहुत अच्छी बात की, just she has also added in my knowledge, और मैंने ये समझ लिया है कि she has understood it. Yes, any other question from any other person? जी बेटा? Yes. Are you want to add some comment? Yes, please. जी बेटा, आप सुन रहे It's a हैं? very interesting theory. Sign. Yes, sir. We are listening. Yes, yes. जी, Sir, this is very interesting theory. हाँ। अब मैं जो आपको ये सब्जेक्ट जो पढ़ा रहा हूँ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जब भी जो है मैं फेडरल पब्लिक कमीशन में अपीयर हुआ हूँ, मुझसे पूछा गया है व्हाट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, what is mythology, what is structuralism, what is post structuralism, what is feminism. ज्यादातर क्वेश्चंस जो है वो इस सब्जेक्ट से किए गए, बिकॉज जो है ये इस सब्जेक्ट्स में जो है बेसिकली वो चीजें हैं कि हाउ यू यूज थियरी, how you apply theory and how you just evaluate and interpret literature. आप लिटरेचर को कैसे इंटरप्रेट करते हैं और कैसे उससे मीनिंग जो है ड्राइव करते हैं, ठीक है, एंड हाउ देयर इज अ ग्रेट कनेक्शन बिटवीन लिंग्विस्टिक एंड लिटरेचर। क्योंकि जो है जब हम लोग बात करते हैं बार की बात करते हैं या सोशल की बात करते हैं, बेसिकली जो है इनकी कंट्रीब्यूशन जो है लिंग्विस्टिक में बहुत ज्यादा है, लेकिन जो है देयर इज अ ग्रेट कनेक्शन बिटवीन लैंग्वेज एंड लिटरेचर, बिकॉज जो न्यू क्रिटिसिज्म है उसके अंदर ये है कि सिंबल्स बेसिकली बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जैसे उस सिमली है, मेटाफर है या फिगर्स ऑफ स्पीच जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ग्रामर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल करता है, तो देयर इज अ ग्रेट कनेक्शन। तो इस सब्जेक्ट के अंदर जो है आपकी थिंकिंग के लिए, आपकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एस्थेटिसिज्म मैंने आपको समझाया ऑस्कर वाइल्ड का, और बाद में जो है हमने बहुत सारी चीजें की, इम्प्रेसिज्म समझाया। तो देयर आर मेनी थिंग्स फॉर यू टू लर्न दीज थिंग्स, आपको ये चीजें समझ में आए और